Hello my dear students. In this video I am going to explain you about the inverse trigonometric function for class 12 ISC mathematics. I have taken the reference of this book Understanding ISC Mathematics by M.L. Agrawal. Inverse trigonometric function not only in the ISC board, in CBSE board also. But before that, you must watch the video till the end. Then you can understand. And the parts of the video I'll make. Before also you have to watch the trigonometric video which I had made in my playlist. It is there. Why trigonometry? Because it is inverse trigonometric function. So this is based on trigonometry. I will tell you how it is based on the trigonometry. But if you like the content of the video, you subscribe the channel, that is studybright, and it will be very helpful for you. Okay, so how it is this one related with the trigonometry? When you say that sine theta, what is sine theta? Is the trigonometric function. What is cos theta? Also the trigonometric function. How many trigonometric functions are there? There are 6 trigonometric functions altogether. Sine theta, cos theta, cot theta, tan theta, sec theta and cosec theta. And you know, if x is equal to sine theta, for example, you can see this is the trigonometric sine theta, x is equal to sine theta, or you can say the function means this fx is equal to sine theta. हम fx is equal to लिखे या x is equal to लिखे, एक ही बात है. तो अभी हम पहले इसको x is equal to लिख रहे हैं. What is the meaning of theta and what is the meaning of x? You have read about the function in class 11. In 12th also the first chapter, but in the class 11 the function is there. This is trigonometric function. How it is trigonometric function? The definition of the function that you know, that every element must be associated with the unique element of the set B. Means every element, if there are 2 sets A and B, then every element of set A must be associated with the unique element of the set B. Okay, I will tell you about the function also in this class 12, that is relation and function chapter. So theta and this x, the meaning of theta, this is the domain of the trigonometric function, sine theta, domain of the sine function. X is range of the sine function. मतलब थीटा की हम जो वैल्यूज रखेंगे उस पर जो हमें पूरी साइन थीटा मिलेगा. जैसे फॉर एग्जांपल पाई बाई 4 रखा तो साइन पाई बाई 4 इज 1/√2. तो पाई बाई 4 इज डोमेन एंड 1/√2 इज द रेंज. तो ये डोमेन और रेंज है. सिमिलरली इफ यू पुट हियर पाई बाई 2 तो दैट विल कम द 1. x is equal to 1. तो थीटा मींस the pi by 2 is domain and 1 is the range. As you know, in the sine function, the range is -1 to 1. यानी -1 के पहले नहीं हो सकती ये वैल्यू in case of sine, and the not beyond the 1. 1 के ज्यादा नहीं हो सकती है और -1 से कम नहीं होती. Not less than -1 and not greater than 1. इनके बीच में वैल्यूज लाई करती हैं साइन थीटा की. Means range of the sine theta. But in every value, ये मतलब फंक्शन तो है, but for the inverse function क्या होना चाहिए? इन्वर्टिबिलिटी तभी लागू होती है, तभी फॉलो होती है जब कोई भी फंक्शन 1/(1) होता है. When the function is 1/(1), any function is 1/(1), then it is invertible. Otherwise, it is not invertible.
In the introduction of the inverse trigonometric function, it is given only 1 and onto functions are invertible. If a function f is 1 and onto, then it inverse exists and is denoted by the f inverse, या कोई भी function f है तो उसका inverse -1. But trigonometric functions are not 1 over their whole domain. पूरे डोमेन में ये 1 onto नहीं होते हैं, उसका भी अभी हम बता रहे हैं क्यों नहीं होते. But it may be 1 onto in the restrict domain. मतलब कुछ पार्ट में ये 1 हो सकते हैं, onto 1 हो सकते हैं. तो what is the meaning of the 1 and onto? 1 मतलब एक से एक ही corresponding हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 सेट है, ये आपके मान लीजिए ये 2 सेट है, 1 2 3 4 5 6. 1 4 से रिलेटेड हो, 2 5 से रिलेटेड हो, 3 6 से रिलेटेड हो. दिस इज कॉल्ड 1 onto. 1 मतलब 1 to 1. onto means no element is left in the set B. इसमें कोई एलिमेंट छूटा ना हो, तो that is called the onto. तो in case of the inverse trigonometric function, because invertible, this is for the invertible, no element you can left in the set B. तो इसीलिए कहा जाता है कि if the function, any function is 1 and onto, then you can say the inverse exists, otherwise inverse does not exist. Clear? Now the domain of this function is -π/2 से π/2. वो domain is real number in this theta is real number and the range is -1 to 1. Range of the sin theta, that is -1 to 1, and domain of the sin theta means theta you can write any real number, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं. जो भी वैल्यू लिखेंगे हमारा आंसर -1 से 1 के बीच में ही आएगा, r -1 and 1. What is inverse? If you take sin here in this, मतलब left hand side, then theta will be the sin inverse x. Okay? अगर sin को इधर ले ले तो थीटा क्या हो जाएगा, sin inverse x. Now the range is changed now into domain and the domain is changed now into range. यानी कि अब हमारा ये उल्टा हो गया. कोई भी फंक्शन जैसे y is equal to fx जब होता है तो यहां पे x डोमेन है, y रेंज है. अगर x is equal to इसका इनवर्स ले लें तो in that case that will be the f inverse y is equal to x. अब क्या होगा, y डोमेन हो गया, x रेंज हो गया. दैट इज ओनली द इंटरचेंजिंग द डोमेन एंड द रेंज. बट द कंडीशन इज दैट शुड फॉलो द एग्जिस्ट द 1 onto कंडीशन. ये जरूर होना चाहिए. अब यहां पे ये डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया. ओके, इसके पहले हम ग्राफ से समझाना चाहेंगे कि ये 1 फंक्शन और रिस्ट्रिक्ट डोमेन क्या है. दिस इज द ग्राफ ऑफ द साइन फंक्शन, साइन थीटा. इसका साइन थीटा का ग्राफ आपने अगर बुक में देखा हो तो हर जगह पे आपको इसी तरह से मिलेगा. ओके, यू विल गेट द सेम टाइप ऑफ ग्राफ इन योर बुक एनीवेयर. दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस. फॉर 1 फंक्शन, फॉर 1 हाउ टू टेस्ट फ्रॉम द ग्राफ द 1 फंक्शन. एक हॉरिजॉन्टल लाइन लें और पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब और उसको खींचे. यदि वो लाइन मोर देन 1 पॉइंट पे ग्राफ पे मिल रही हो, इफ इट द लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन पैरेलल टू एक्स एक्सिस दैट मीट्स द ग्राफ मोर देन 1 पॉइंट, then you will say that it is not 1 फंक्शन. ये फिर 1 फंक्शन नहीं है. ठीक है, किसी सिर्फ एक फंक्शन को चेक करने के लिए कौन सी लाइन टेस्ट की जाती है, वर्टिकल लाइन. जब हम एक वर्टिकल लाइन खींचे और वो मोर देन 1 मिल रही है तो इन दैट केस दिस इज नॉट ए फंक्शन. लेकिन इसमें कहीं भी खींच दो, कहीं भी वर्टिकल लाइन, ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे मिलेगी. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए फंक्शन. 1 फंक्शन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है और सिर्फ फंक्शन के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है.
and you can see there at this point, at this point, at this point, at this one, means at every point it meeting the graph more than one point. So this is not the one function. But if you restrict, सिर्फ लाइन हमारा यहां से, मतलब इसको अगर एक हम, दिस इज द -π/2, ओके, अगर यहां से खींचे, यहां से एक लाइन एंड ओनली अप टू π/2, मतलब दिस पॉइंट, दैट इज वाई दिस इज 1/2, दिस इज 1, यहां पे 1 होगा, दिस पॉइंट इज 1 और दिस पॉइंट इज 1/2. मतलब अगर हम लाइन को स्ट्रिक्ट कर दें और only we draw the line from -π/2 to π/2, then it will meet at one point only. This is the one function at this range. ये अगर 1 है, फिर onto भी होगा क्योंकि 1 to 1 is relate होगा, अलग अलग वैल्यूज आएंगी. That is why it exists the inverse function. So I made here one figure for the graph of the inverse sine function. So that is the -π/2 to π/2, and the domain domain is -1 to 1. अब इसमें अगर हम टेस्ट भी करें तो it is a function. This is the also the 1 and onto, मतलब सब कुछ है. तो you can see the this theory, and in your book you will get the knowledge about this. Now it is restrict -π/2 π/2. तो क्या सिर्फ एक ही पार्ट है? There is only one part that it exists the inverse. No, there are infinite parts. Why? क्योंकि अगर इस पार्ट से इस पार्ट तक रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, means it exists the inverse. तो from π/2 से 3π/2 पे भी रिस्ट्रिक्शन हो सकती, मतलब इस लाइन पे भी आ सकते हैं. यहां से π/2 to 3π/2 also meet at one point. Yani this is also the domain, you can say, the in which the sine function gives the inverse value. मतलब inverse sine function भी देगा इस डोमेन में भी, π/2 से 3π/2, इसी तरह 3π/2 से भी. So these are called the branches of the inverse trigonometric function in which it exists the inverse, जिसमें ये inverse exist करेगा. तो the first value -π/2 से π/2, this is known as the principal value of the inverse sine function. इसको principal value कहते हैं. Other also the branches but not the principal value. तो ये branches और भी हो सकती हैं, इसको ग्राफ से समझ गए होंगे. तो -π/2 π/2 the first branch, π/2 से 3π/2 the other branch, 3π/2 से 5π/2 the other branch, and here also in the left hand side also. So if in the question it comes the write the value of the means that domain range for this sine domain range of the domain of the sine theta in which it exists the inverse other than -π/2 π/2, तो आप ये लिख सकते हैं π/2 से 3π/2, या इसके आगे भी लिख सकते हैं. तो दिस इज द अदर ब्रांचेस ऑफ द साइन थीटा इन विच इट एग्जिस्ट द इनवर्स. तो ये काफी सारी चीजें थी इनवर्स के लिए. नाउ द मेन थिंग, द प्रिंसिपल वैल्यू अगर साइन थीटा के लिए -π/2 π/2 है, तो क्या कॉस थीटा के लिए नहीं होगी, tan थीटा के लिए नहीं होगी, कॉट थीटा के लिए नहीं होगी. तो similarly you can get the principal value means the range and the domain of the function for all inverse trigonometric function. कितने inverse trigonometric function होंगे? जितने trigonometric function होंगे means 6 inverse trigonometric function you will get. तो हमने यहां पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये कुछ टेबल बनाई है. दिस इज द फंक्शन, डोमेन एंड रेंज. ओके, साइन इनवर्स फंक्शन के लिए व्हाट इज द डोमेन? -1 to 1,
The range is minus pi by 2 both inclusive, मतलब दोनों क्लोज ब्रैकेट में है. It means if you get the answer, कभी अभी क्वेश्चन हम बताएंगे कि जो आंसर आएगा साइन इनवर्स का ऑलवेज कम्स बिटवीन माइनस पाई बाई टू, मतलब इन्हीं को लेकर के ही आंसर. इफ यू आर गेटिंग ग्रेटर देन मतलब बियॉन्ड पाई बाई टू और लेस देन माइनस पाई बाई टू, you have to change into, you have to take that value inside the minus pi by 2, इनके बीच में आनी चाहिए कन्वर्ट करके. इसीलिए हमने कहा ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी बहुत जरूरी है. एंड दैट इज द मेन थिंग, हाउ टू कन्वर्ट द एंगल, वन एंगल टू द अदर एंगल. जैसे पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, लाइक दिस. For cos inverse the domain is same -1 to 1, but the range is principal value. इसको principal value कहते हैं. ये सारी principal value है 0 to pi. Okay, inclusive of 0 and pi. Similarly, tan inverse the domain is a real number and the range is minus pi by 2, but not inclusive. This is the closed open bracket. इसमें close है, इसमें open है. तो यहां माइनस क्यों नहीं है सर? क्योंकि tan pi by 2 as you know this is equal to infinity, means not defined. That is why we cannot take such type of value in which any trigonometric function या any inverse gives the not defined. Similarly, cot inverse the range, domain is real and the range is 0 to pi. Again not inclusive because cot 0 is in infinity and cot pi is also infinity. Sec inverse the domain is this minus infinity to -1 union 1 to infinity, यानी we cannot take between -1 to 1, उसको हटा करके बाकी सब डोमेन ले सकते हैं. And the range is 0 to pi big bracket the square bracket minus pi by 2, because sec pi by 2 is infinity, not defined as you know. इसी तरह से कोसेक इनवर्स में भी सेम है. And this is the close bracket minus pi by 2 minus 0, because cosec 0 is equal to not defined. That is why it is not included. इसको हटा दिया गया है बाकी. तो these are called the principal value and you have to find the value between this given range. इसके बीच में वैल्यूज निकालनी होगी. One example. That is, if you have sine inverse sine 3 pi by 5. Okay, generally sine inverse into sine you can cancel it because these are the reciprocal to each other, but sine inverse you cannot write, sine inverse theta you cannot write as sin theta. ये इक्वल नहीं होता है. दिस इज नॉट इक्वल टू इनवर्स फंक्शन. ये तभी होगा जब ऐसे लिखा हो होल पावर माइनस, देन यू कैन राइट दिस, अदरवाइज यू कैन नॉट राइट. बट देयर इज ए रूल इन विच वी कैन कट द साइन इनवर्स एंड साइन, बट बिफोर कैंसलिंग दिस साइन इनवर्स इंटू साइन या कॉस इनवर्स इंटू कॉस या tan इनवर्स इंटू tan, you must see the range of the sine inverse. मतलब जो दिया गया हो उसका रेंज जरूर देखेंगे. अगर हम काटेंगे तो that is 3 pi by 5. तो 3 pi, what is the range? minus pi by 2. तो क्या ये इसको बिलोंग करता है minus pi by 2 से pi by 2? Whether does it belong? No, ये बिलोंग नहीं कर रहा. तो if 3 pi by 5 does not belong to minus pi by 2, it means we have to convert in other way. How to convert? 3 pi by 5 can you write as pi minus 2 pi by 5? Can you write? Yes, it is equal to 3 pi by 5. Means you can write in place of this part. So what you will get? Sine inverse sine pi minus 2 pi by 5.
And do you know the formula of sine 180 minus theta? Sine 180 minus theta is equal to, that is sine theta. जब भी कन्वर्ट करें ये भी देखें कि क्या ये चेंज तो नहीं हो रहा है, कोई चीज चेंज तो नहीं हो रही है, बिकॉज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज. मतलब ये अगर साइन इनवर्स तो यहाँ साइन ही होना चाहिए. एंड यू विल नॉट गेट द नेगेटिव वैल्यू, जैसे कभी कभी माइनस साइन थीटा आ जाता है, माइनस कॉस थीटा आ जाता है, दैट शुड नॉट बी ऑल्सो. तो साइन इनवर्स नाउ यू कैन राइट एज साइन 2 पाई बाई 5. And this 2 pi by 5 lies between minus pi by 2, pi by 2. You can check. Pi is equal to 180 degree. So now you can cancel, and this is equal to 2 pi by 5, which belongs to minus pi by 2, say pi by 2. So by this way, this is the complete solution. Then you can say the 2 pi by 5 is the value of this expression. So by this you can get one more example. Tan inverse tan 7 pi by 6. Find the value of this. क्या 7 pi by 6, सबसे पहले tan inverse की रेंज क्या होती है बताएं. Belongs to, whether it belongs to minus pi by 2 say pi by 2. Again the range in open bracket, whether it belongs to minus pi by 2 pi by 2. No, it does not belong. तो जब ये belong नहीं कर रहा है तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा. तो इसको हम लिख देते हैं does not belong. Tan inverse tan, how you will break this 7 pi by 6. Pi plus theta, tan pi plus theta is equal to tan theta, and you know this one. So you can write pi plus pi by 6. So there will be no change in the trigonometric function. मतलब tan pi plus theta is equal to tan theta. So at this will come like this, but the angle will change at pi by 6. And pi by 6 belongs to this minus pi by 2 pi by 2. So you can write now tan pi by 6, but also you will write here the formula. Okay, then you can cancel it, and pi by 6 belongs to minus pi by 2 to pi by 2 belongs to. This is the answer. So ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन द सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एंड इफ यू अंडरस्टूड देन यू कैन डू द क्वेश्चंस. अदरवाइज द नेक्स्ट पार्ट आई विल मेक द वीडियो फॉर द अगेन द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. यू मस्ट वॉच एंड गेट द नॉलेज. थैंक यू.